हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। केम छो बधाय मजामां अने तमारुं स्वागत है नीलम धड़क ब्लॉग में। अने हूँ छुं नीलम अने आजे से रविवार तो सवारनो ब्लॉग तमारी साथे शेर करूँ छुं। अने पछी मैं नाई धोईने कम्प्लीट थई गई ने पछी आवी गई थी मंदिर में भगवाननी सेवा पूजा करवा अने मंदिरनी साफ सफाई करी नाखी अने पछी मैं भगवाननी आरती उतारी लीधी। આવી રીતના આપણે સેવા પૂજા કમ્પ્લીટ કરી નાખીએ ભગવાનની। અને તમને એક ખાસ વાત કહેવાની છે કે તમે મારી ચેનલમાં પહેલી વાર હોવ ને તો પ્લીઝ ફ્રેન્ડ્સ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો। અને કોમેન્ટ તમે બિલકુલ પણ નથી કરતા તો પ્લીઝ તમે કોમેન્ટ પણ કરો તો હું તમને રિપ્લાય આપું અને આપણે એકબીજા ફ્રેન્ડ્સથી એક ફેમિલી બનવાની કોશિશ કરીએ અને એકબીજાની માહિતી જ આપણે એકબીજાને મળતી રહે। તો પ્લીઝ ફ્રેન્ડ્સ તમે લોકો મને કોમેન્ટ જરૂર કરજો। मंदिर में अपनी सेवा पूजा कम्प्लीट थई गई पछी आई गई तुलसी मानी पूजा करवा। आपणे तुलसी माने सांडलो कर्यो पहला अने पछी आपणे एने आरती करी अने पछी आपणे एने जल अर्पण करी दीधुं अने आवी रीतना मारी तुलसी मानी सेवा पण पूजा कम्प्लीट थई गई। सेवा पूजा कम्प्लीट थई गई पछी हूँ आवी गई रसोड़ा में केम के मारे हजी सवारनो नास्तो बाकी हतो अने पछी मैं सवारनो नास्तो बनावी नाख्यो अने पछी हूँ अने स्नेह बेसी गया जमवा। केम के दक्ष तो सूतो हतो एटले एमने नास्तो नहोतो करवानो अने विपुल तो घरे हता ने केम के गया छे गामडे केरी लेवा। अमारे घरना आंबा है तो केरी लेवा अमारे जवुं पड़े। पहला तो मारा ससरा हता तो ते अमे त्रणेय भाईने मोकली देता हता पण हवे तो ते नथी एटले पोतपोतानी केरी तो पोताने ज लेवा जावी पड़े। तो विपुल गया था केरी लेवा अने एणे पण थोड़ो घणो ब्लॉग बनाव्यो छे गामडानो तो हूँ ए तमारी साथे शेर करीश आगळना विडियोमां। एमने मैं कीधुं हतुं कि तमे थोड़ी गामडानुं जे व्यू है थोड़ोक शूट करजो एटले हूँ विडियो में बतावी सकूँ कि गामडा केवुं जीवन होय छे अने गामडानुं केवो व्यू होय छे। तो ए तमारी साथे जरूर शेर करीश। पछी हजी मैं माथुं ओळ्युं नहोतुं अने आजे रविवार एटले माथुं धोयुं हतुं भूस काढवानी बाकी हती पण मैं पहला नास्तो कम्प्लीट करी नाख्यो पछी मैं भूस काढी अने जो मारा वाळ थोड़ा घणा जाय छे। पछी हूँ आवी गई हती साफ सफाई करवा अने आजे रविवार एटले चादर पण आपणे बदलावानी होय तो आवी रीतना घरनुं कामकाज करती रहती हती अने तमारी साथे शेर कर्युं बधुं कामकाज आजनुं सवारनुं। आम तो आपणे रेग्युलर बधी साफ सफाई तो करता ज होईए पण ज्यारे रविवार होय ने त्यारे थोड़ी शांति होय एटले आपणे मनथी बधुं काम करी शकीए केम के ते दिवसे आपणे उतावळ न होय निरात होय एटले। अने आजे एमां विपुल नहोता एटले थोड़ी शांति हती केम के ई होय तो थोड़ुं घणुं आपणे उतावळ राखवी पड़े ने तो आज तो मैं बधी साफ सफाई करी नाखी बधुं लूसी नाख्युं सरसथी अने पछी सरस बधुं झापटी झूपटीने कचरा काढी नाख्या पछी बधीथी। अने छे ने अमुक वस्तु तो एवी होय छे के आपणे गमे तेटली साफ सफाई करी होय ने तो ज्यारे आपणे करता होय ने तो अमुक वस्तु आपणाथी भूलाई जाय छे झाड़ा लेवाना अने ज्यारे आपणे नवरा बैठा होय त्यारे ई वस्तु आपणे देखाय तो अने गमे तेटलो आपणे साफ सफाई करवी तो अमुक खूणा एवा होय छे कि त्यां धूळ मिट्टी एवुं रही जतुं होय पण ए समय आपणे नजर न आवतुं होय। पछी आपणे सरस मजानी धोयेली पिंक चादर आपणे पाथरी दीधी सेटी उपर अने पछी आपणे तकियाना जे कवर बाकी हता चढ़ाववाना ते पण कवर चढ़ावी दीधा अने ए काम पण आपणे कम्प्लीट करी नाख्युं। एक हाउसवाइफ जे स्त्री होय छे तेना जीवन में घरनुं काम आवुं नानुं मोटुं चालतुं होय छे। साफ सफाई राखवानुं घरने व्यवस्थित राखवानुं अने आपणे आवी रीतना बधा कामो करता होय छे अने जेटलुं आपणे घरने साफ सफाई राखशुं तेटलुं ज आपने पण पसंद आवशे घर अने सरस लागशे आपणुं घर। केम के आपणे पण एवुं ज विचारता होय के आपणुं घर बधा करता अलग देखावुं जोईए ने सारुं देखावुं जोईए। तो आवी रीतना आपणे साफ सफाई बधुं करता ज होय छे। हूँ नहीं बधी स्त्री करती ज होय छे पोतानुं घर बधाय सोखुं राखता ज होय छे एटले एमां मारे कोईने विरोध करवानी जेवी वात तो छे नहीं के कोई नवीन वात नथी। पण हूँ तो मारी लाइफनो जे अनुभव हतो ए तमारी साथे शेर कर्यो एटले तमने विडियोमां थोड़ुं घणुं कीधुं पण छतांय तमने कोईने खोटुं लाग्युं होय तो दिलथी सॉरी।
પછી બધા કપડાં આપણે નાખી દીધા મશીનમાં ધોવા, અને પછી આપણે ટોયલેટ બાથરૂમ પણ સરસ રીતના ધોઈ નાખ્યા. અને મારું વોશિંગ મશીન તે જે છે તે મેં બાથરૂમમાં જ રાખ્યું છે, એટલે થોડીક સાફ સફાઈ કરવામાં કેવડાવે, પણ તોય મેનેજ કરી લઉં છું. તો પહેલાં તો છે ને બહુ ગરમી થઈ હતી ને કામ કરતી હતી ત્યારે, તો મેં વાળ છે ને બાંધી દીધા હતા, અને પછી કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ને એટલે પાછા મેં વાળ ખોલી નાખ્યા, એટલે કેમ કે ભીના વાળ હતા તો સુકાઈ જાય એટલા માટે. અને કાલે છે ને થોડા ઘણા કપડાં છે ને ભીના રહી ગયા હતા, તો પછી મેં સૂકવવા રાખી મૂક્યા હતા, અને લેવાના પછી ભૂલાઈ ગયા. અને તો આજે કવરમાં થોડા કપડાં બાકી રહી ગયા હતા સંકેલવાના, તે આજે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું, અને સવારનું કામ બધું આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું. પછી બધા કપડાં ઘડી કરી અને આપણે કબાટમાં સરસ રીતના વ્યવસ્થિત ગોઠવી દીધા. પછી કામ બધું કમ્પ્લીટ કરી રહીને 11 સવા 11 થઈ ગયા, અને પછી લાગી હતી ભૂખ, તો આપણે બનાવી નાખી રસોઈ, અને બનાવી નાખ્યું સેવ ટમેટાનું શાક, અને નાખી દીધી ઉપરથી સરસ સેવ ભરપૂર. અને આગળનો બ્લોગ છે ને ગામડાની થોડી ઘણી આપણે લાઈફ છે ને તે તમારી સાથે શેર કરવાના છે, કે કઈ રીતના આપણે કેરી લાવ્યા હતા સુરત, તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. અને હા, વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક જરૂર કરી દેજો. ઓકે, બાય.